Welcome to your S.St class again, my dear students. Today we are back again, yet with a more blazing topic of our society. In fact, we should say an evil practice of the society. Can you guess it as per your political science textbook? What could be? Okay, let me make your task easier and let me express my words. See, students, when we are writing notes in our copies, we are either asked to draw a margin or there is a printed margin at the left hand side of your notebook. In that margin, what we do is the serial numbers of the question and answer we put on the left hand side, and the text we write. For the writing the text we use the right hand side space. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो छोटा सा स्पेस बचता है उसको मार्जिन बोलते हैं. एज अ स्टूडेंट हम मार्जिन वर्ड का मतलब यहीं तक समझते हैं कि जो नोटबुक में बनी हुई होती है, जो हमारी आंसर शीट्स होती हैं, इन विच वी राइट अवर आंसर्स इन द एग्जाम, whatever is left to it, that is meant for writing serial numbers, and right hand side for answers. Okay, so if suppose those answers starts jumping into the left hand side, it is called as untidy work. We are always strictly asked to write answers in the broader space. अगर वो दोनों चीजें इंटरमिक्स हो जाती हैं, then we are scolded by your teachers. So that margin makes distinction between two things. Or when we do a question or do an answer of comparison, distinction, difference, then also we draw a margin right in the middle of the copy where we do comparison between two things. जब हमें दो चीजों में फर्क पता करना होता है तो हम बीच में एक मार्जिन बना देते हैं अपनी नोटबुक में, और दोनों चीजों के बीच में हम डिफरेंसेस देखते हैं क्या है या कंपैरिजन देखते हैं. Exactly, this margin also creates a difference in our society as well. How? Because we start judging the people, we start drawing an invisible margin between the people. हम एक imaginary line ड्रॉ कर लेते हैं सोसाइटी के बीच में, लोगों के बीच में जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं. हम एक सुपरफिशियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें इस लाइन से आगे नहीं जाना है. इन व्हाट सेंस? Means we hesitate in mixing up with certain peoples if they belong to certain community, if they speak differently. अगर उनका लैंग्वेज बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका अलग है, तो we maintain a gap between them, we draw margin between them. If they are dressing in a different way, then also we keep a distance from them. If they are from a different religious community, then also we tend to create a margin between them. And it's not our fault, it's this practice going is being prevalent since ages. Okay, if a person is from different gender, opposite gender, then also sometimes we draw margin in between them. And because of this margin, creating of this margin, एक पूरा का पूरा ग्रुप हमारी सोसाइटी का एक इमेजिनरी लाइन से दूसरी तरफ खिसक जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जिसको हम कभी भी अपने साथ मिक्सअप होने नहीं देते या हम उनके साथ मिक्सअप नहीं होते. रीजन? इधर रिलीजियस फैक्टर, डिस्टिंक्शन ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स दे आर वियरिंग, देयर बर्थ प्लेस, वो कहाँ के पैदाइश हैं, उनका मेन नेटिव प्लेस कौन सा है, या मे बी बिकॉज ऑफ जेंडर और फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस. ओके, so this marginalization is very harmful for our society. Okay, so in this chapter today which we have taken of civics, chapter number 8, confronting marginalization. Confronting means how can the marginalization be removed from our society by these groups, what initiative they can take. जिसके साथ में मार्जिनलाइजेशन होता है सोसाइटी के अंदर, वो लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं उस चीज को फेस करने के लिए, उस चीज को अपनी लाइफ से रिमूव करने के लिए. इट्स अ सोशल कर्स टू देम, ये उनके लिए एक सामाजिक श्राप है. तो वो कैसे इस चीज से उभर पाते हैं, कैसे इस चीज से डील करते हैं, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. ओके, सो लेट्स सी. मार्जिनलाइजेशन डील्स विथ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ऑफ कोर्स उनके साथ भेदभाव होता है जब भी वो एक मार्जिन से दूसरी साइड में
बैठे हुए होते हैं या हम उनको जबरदस्ती उठाकर रख देते हैं. दे डील्स दे आर ट्रीटेड इन with unequal status. Okay, what are the ways in which these groups can present themselves? उनके पास क्या कुछ तरीके हैं अपनी बात को रखने के या अपने आप को इक्वल लाने के, इक्वल साबित करने के. मार्जिनलाइजेशन ग्रुप have recent times fought, protested and struggled because they were excluded from the mainstream of the society. उन्होंने समय समय पर आंदोलन किए, धरने दिए, हड़ताल की और बहुत संघर्ष किया कि हमें भी समाज का मेन हिस्सा बनाएं, to make us also the main system of Indian society. They undertook methods such as religious solace, armed struggle, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, उन्होंने अपने आप को हर तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करी, एजुकेशन से भी, इकोनॉमिकल स्टेटस से भी, सोशली वेल डेवलप्ड होने से भी. बट स्टिल द सिचुएशन इज अनहैप्पी. It's not good that still not that much good that we can say that marginalization is finished from our society. Okay, minority groups have suffered inequality. I will just read out some these minority groups. Minority, yeah, you can say marginalized group: Adivasis, Dalits, sometimes women's also in the society are marginalized due to some reasons, and other groups. Instead, uh, they should be getting, the Constitution of India says that everyone has equal stand before the law. Everyone has equal rights, equal fundamental rights. Everyone is equal before the Constitution. Still there is marginalization in our society with the groups being enjoying the equal rights. Still they are marginalized in many different phases of the society. Okay, now how the government is taking initiative to upgrade these peoples? Let's see. The rights which government has made in the starting phase, गवर्नमेंट ने जो इन लोगों के लिए अधिकार बनाए थे, विशेषाधिकार, वो धीरे धीरे कानून में कन्वर्ट हो गए. दे हैव कन्वर्टेड इनटू लॉज. ओके, नाउ दे आर पावरफुल लॉज. ऑल्सो द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज. गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बना रही है जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, सो दैट उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनका मोरल अप हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड दे आर not to be exploited by the stronger groups of the society. Okay, we will discuss two more headings of this chapter in the same video, so please keep watching it for your better understanding. Okay, students, let's see the heading. In fact, this is the first heading of the chapter, invoking fundamental rights. How these fundamental rights were upraised, uplifted, especially for the marginalized people. And there is a need also to invoke them further, to upgrade them further. Initially, fundamental rights are equal for all. As you all know, we have discussed it many a times. In our first chapter, the Constitution of India, and other chapter of civics, judicial system, we have discussed many times that fundamental rights are equally available to all the citizens. Okay, fundamental rights have been forced on the government to stop injustice against them. Them means marginalized group. The fundamental rights creates a sort of pressure on government by which this marginalized group are being protected against having injustice against them. फंडामेंटल राइट्स ने एक अच्छा खासा रोल प्ले किया है जो सरकार को बाध्य करती है इनके खिलाफ किसी भी तरीके का इनजस्टिस होने से रोकने के लिए, कि इनके साथ कोई अन्याय ना हो. द स्ट्रगल हैज फोर्स्ड गवर्नमेंट टू मेक न्यू लॉज. इनके संघर्ष ने लगातार गवर्नमेंट को इस बात के लिए फोर्स किया है कि सरकार इनके लिए टाइम टू टाइम न्यू लॉज बनाए, नए कानून बनाए. ओके, like we will be discussing few articles, few rights. Article number 17 says that untouchability should be abolished by any means. Untouchability यानी छुआछूत, इसको, this is a social evil, this is a social wrong practice, it should be stopped at once, immediately. It should not be into practice no more in the Indian society. आर्टिकल नंबर 15 से दैट देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी व्यक्ति के साथ इंडिया के भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट. डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी डन on the basis of, can't be done on the basis of religion, race, caste,
जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, किसी भी जेंडर से है, या कहीं पर भी उसका जन्म हुआ है इंडिया में कहीं पर भी, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड हिज बर्थ प्लेस। ओके। And also government of India ensures right to freedom of religion and cultural and educational rights as well. Every person has a freedom to practice his or her religion, his culture and educational right. He can study his religious education as well. He can continue his religious education as well. There is some more to add in this video. So let's take a new page for discussing more points. Okay, there's an example that was left to be quoted in the heading invoking fundamental rights. Certain minority groups in India, like Parsis, they are having full freedom to practice their own indifferent culture in India. Okay, they have full rights to do so as per the guarantee of Indian Constitution, as per the guarantee of the cultural and educational right by fundamental rights of India. Okay. Government also ensures that cultural justice should be there to ensure that the majority group of India should not harm the dignity and should not exploit the minority groups of India. ये ये इंश्योर करता है कल्चरल जस्टिस कि इंडिया में जो ग्रुप्स ज़्यादा संख्या में है वो अल्पसंख्यकों को किसी भी तरीके से परेशान ना करें, उनके साथ में कोई भेदभाव ना करें, कोई इनजस्टिस ना करें। ओके। Now let's see laws for marginalized. Government makes Initially the government makes the law which are applicable to all the citizens of the country. Government doesn't makes any difference in making them. Still there are some specific laws and policies which are specially designed for the marginalized group. Like government initiative, government sets up new committees and it conducts surveys time to time. It takes feedback of the groups, marginalized group, so that everything is फाइन एंड ओके। उनसे समय समय पर उनसे उनकी राय ली जाती है, फीडबैक लिया जाता है कि गवर्नमेंट एड्स उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उनके साथ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, whether they are being exploited or not by any other strong system, and they are also given opportunities to perform tasks. These marginalized group are given some special opportunities. So dear students, in this video that's it for to be discussed. I hope you have understood these 2 3 headings which you have tried. I am not taking much so that you can understand this chapter step by step. Okay, you can take a reading also while watching the video. Thank you. That's it for the day. Jai Hind.